बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जनरल साइंस क्लास 6 की पॉइंट्स और एक्सरसाइज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। तो शुरू करते हैं। माइक्रोस्कोप इज़ एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू ऑब्जर्व थिंग्स विच आर नॉट विजिबल टू द नेकेड आई। अ सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। स्ट्रक्चर और फंक्शन का बेसिक यूनिट कौन सा है? सेल। ईच सेल हैज़ अ स्पेसिफिक फंक्शन। हर एक सेल का एक ख़ास काम होता है। एनिमल एंड प्लांट सेल्स हैव सम कॉमन स्ट्रक्चर्स लाइक सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल एंड न्यूक्लियस। एनिमल और प्लांट सेल में कुछ डिफरेंसेस भी है, जैसा कि इसमें प्लांट सेल में वैक्यूल बड़ा होता है और एनिमल सेल में वैक्यूल छोटे होते हैं, और प्लांट सेल में सेंट्रीव्यूल नहीं होता, एनिमल सेल में होता है। प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट होता है, एनिमल सेल में नहीं होता। प्लांट सेल में सेल वॉल होता है और एनिमल में सेल वॉल नहीं होता। प्लांट सेल्स हैव अ सेल वॉल, क्लोरोप्लास्ट एंड लार्ज वैक्यूल। द बॉडी ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इज कंपोज्ड ऑफ वन सेल एंड द बॉडी ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म इज मेड ऑफ मोर देन वन सेल। सेल्स वर्क टुगेदर टू मेक अ टिश्यू। जब बहुत ज़्यादा सेल्स जमा हो जाते हैं तो एक टिश्यू बाप्त बन जाता है। मेनी टिश्यूज मेक वर्क टुगेदर टू मेक एन ऑर्गन। और बहुत ज़्यादा टिश्यूज क्या बन जाते हैं? ऑर्गन। सेल, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गेनिज्म। सेल्स जमा होकर टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन ये एक ऑर्गन सिस्टम बनाता है और ऑर्गन सिस्टम एक ऑर्गेनिज्म बनाता है। Many organs combine to work together to make a system. Many systems combine to make an organism. A cell is the structural and functional unit of living organism. सेंट्रीओल किस चीज़ में होता है? एनिमल सेल में होता है और ये सेल डिवीजन करता है। इसका काम होता है सेल डिवीजन। सेल मेम्ब्रेन इज द आउटर मोस्ट कवरिंग इन एनिमल सेल। एनिमल सेल में आउटर मोस्ट कवरिंग क्या होता है? एनिमल्स सेल मेम्ब्रेन। और प्लांट सेल में सेल वॉल होता है। यूग्लिना क्या है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यह खलवी जानदार है। Plants prepare food and their chlorophyll. Muscle is a type of tissue. Muscle क्या है? एक टिश्यू है। A branch on a stem is part of shoot system. प्लांट में दो सिस्टम होते हैं, एक शूट सिस्टम होता है और एक रूट सिस्टम होता है। शूट सिस्टम होता है जो तने से ऊपर, ज़मीन से ऊपर हो, और रूट सिस्टम नीचे ज़मीन में जो सिस्टम होता है। Which system of your body is responsible for the transport of digested food? तो ये होता है सर्कुलेटरी सिस्टम, दौरानी निज़ाम खून। ब्रेन कंट्रोल्स द बॉडी जस्ट लाइक द न्यूक्लियस कंट्रोल एक्टिविटीज ऑफ अ सेल। एक बॉडी में कौन सी चीज़ ब्रेन और एक्टिविटीज कंट्रोल करता है? और सेल में न्यूक्लियस। विच इंस्ट्रूमेंट कैन हेल्प टू सी अमीबा क्लियरली? माइक्रोस्कोप। और टेलीस्कोप ये दूर की चीज़ों की देखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वैक्यूल क्या काम करता है? स्टोर वेस्ट मटेरियल ऑफ सेल्स। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल है और न्यूक्लियस कंट्रोल सेल एक्टिविटीज़। क्लोरोप्लास्ट हेल्प इन फूड प्रिपरेशन एंड सेल वॉल इज द आउटर लेयर ऑफ प्लांट सेल। चैप्टर 2 वी हैव सेंस ऑर्गन्स विच हेल्प अस टू डिटेक्ट चेंजेस इन द एनवायरनमेंट। सेंस ऑर्गन्स कितने हैं? ये 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं जिसके ज़रिए हम 5 चीज़ें हैस कर सकते हैं। द आई कंसिस्ट ऑफ 3 कोर्स, स्क्लेरोटिक, कोराइड एंड रेटिना। स्क्लेरोटिक वाइट होता है, आउटर मोस्ट होता है, कोराइड मिडल और ये ब्लैक, और इसमें ब्लड वेसल्स होते हैं। और रेटिना ये इनर मोस्ट होता है और इसमें सेंसरी सेल्स होते हैं। द मैसेजेस फ्रॉम आईज पास थ्रू द ऑप्टिक नर्व्स टू द ब्रेन, ऑप्टिक नर्व्स के जरिए। Ear is the organ of hearing and it contains of 3 parts: outer ear, middle ear and inner ear. The message of sound passes through the auditory nerves to the brain and thus we hear the sound. The sense of touch is located in the skin. Touch cells are connected to the brain by nerves. The sensation of smell is detected by the cells present in nasal chamber. The tongue contains taste buds which help us to differentiate between different tastes. Receptor cells कहाँ पर होते हैं? ये सेंस ऑर्गन्स में होते हैं। The layer of the eye that has sensory cells is called retina. Vibration of the eardrum is due to sound waves. The sensation relating to sour and salty taste
जो सोर के होते हैं वो बोथ साइड्स पर होते हैं और साल्टी टिप ऑफ द टंग पर होते हैं। तो उसके रिसेप्टर साइड्स सोर के बोथ साइड्स और सॉल्टी टिप ऑफ द टंग्स पर होते हैं। यू कैन स्मेल odorous substances through your nose. We can sense different stimuli due to sense organs, and the eye sensory cells are located on retina. और ये क्या होते हैं? rods and cones. The optic nerves behind the retina take signals to the brain. Hearing is helped by auditory nerve. Which organ is used for tasting? Tongue. Chapter 3. Sun is the ultimate source of energy for planet Earth. Photosynthesis is a process through which plants combine carbon dioxide and water. Photosynthesis में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर इस्तेमाल होता है सनलाइट की मौजूदगी में और इसमें खुराक तैयार हो जाता है in the form of glucose. The leaf surface presence of chlorophyll and stomata are the feature which help photosynthesis. Light, carbon dioxide, temperature, chlorophyll and water are the essential factors for photosynthesis. photosynthesis के लिए क्या चीज़ जरूरी है? लाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, टेम्परेचर, क्लोरोफिल और वाटर. Respiration is the breakdown of food glucose C6H12O6 to release energy. Respiration takes place in all animal and plant cells. All animal and plant cells में respiration होता है. The main source of energy is sunlight. Mesophyll cells contain chlorophyll और ये क्या है? photosynthetic green pigment. Epidermal layer in a leaf contains small pores called stomata. Normal temperature range for photosynthesis is 25 to 35 degrees centigrade. During photosynthesis, light energy is converted into chemical energy. Plant makes their own food through a process called photosynthesis. Which of these is not needed in the process of photosynthesis? Oxygen is not needed. Sunlight, carbon dioxide, and chlorophyll are needed for photosynthesis. The small pores or openings in leaves that take in the carbon dioxide are called stomata. The suitable temperature is 25 to 35 degree centigrade. What is given off? Given off मतलब जो देते हैं by the plant during photosynthesis. यानी photosynthesis के दौरान क्या पैदा होता है? Oxygen. Chapter 4. Everything that surrounds us is our environment. Abiotic components of environment consist of sunlight, temperature, rainfall, water, soil. Abiotic होता है जो जिंदा नहीं होते. Biotic component वो होते हैं जो जिंदा होते. Primary producers, consumer और decomposer पर मुश्तमिल होते. In an environment there is an interdependence यानी एक दूसरे पर इन्हिसार करते हैं. Biotic और abiotic components एक दूसरे पर interdependence है, एक दूसरे पर इन्हिसार करते हैं. Interaction between the organism may be useful or harmful for one or both interacting organisms. Non-living components of environment are called abiotic component. A. Virgin. In an environment, plants are regarded as producers. Lion is regarded as a predator. Shikari होता है in a predator-prey relationship. One of the examples of parasites in human body is tapeworm. और इसका दूसरा parasite का दूसरा example है. ये human में नहीं होता लेकिन mosquito. Bacteria in the intestine of human being is an example of mutualism. Mutualism वो इंटरेक्शन होता है जिसमें दोनों को फ़ायदा होता है और इसको commensalism भी कहा जाता है. Identify the abiotic component in the following. तो lion, apple और beetle ये क्या है? abiotic है. Water vapors abiotic है, इसमें कोई जान नहीं है. The relationship between two organisms where both are benefited and neither is harm is called mutualism, commensalism. Third is an example of desert. Mosquito feeding on human blood is an example of parasitism. There are two major types of natural environment. Aquatic होता है और एक terrestrial. आबी और खुश्की वाला. Chapter 5. Atom is the smallest particle of an element that takes part in chemical reaction. It may or may not exist free in nature. Symbol is a short name of an element. A molecule is formed by the chemical combination of two or more atoms. Compound is a substance which is formed by the chemical combination of two or more than two different elements in a fixed ratio. इसमें fixed ratio होता है, chemical combination compound है. Mixture में कोई proportion नहीं होता है, ये randomly मिल जाते हैं. When two or more than two substances are physically combined with each other in any proportion, किसी भी तनासुब में मिल सकते हैं. कंपाउंड और मिक्सचर में यही फर्क है. मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड इनटू इट्स कंपोनेंट बाय फिजिकल मेथड्स सच एज फिल्ट्रेशन, डिस्टिलेशन, सब्लिमेशन, क्रोमेटोग्राफी. फिल्ट्रेशन के जरिए हम सेपरेट करते हैं इनसॉल्युबल पार्टिकल्स फ्रॉम लिक्विड. इनसॉल्युबल पार्टिकल लिक्विड्स से हम फिल्ट्रेशन के जरिए हम
अलहदा करते हैं। सब्लिमेशन वो अमल होता है जिसमें सॉलिड डायरेक्ट गैसेस हालत में चला जाता है, जैसे कि आयोडीन, अमोनियम क्लोराइड और नेप्थलीन में ये होता है। डिस्टिलेशन इज अ सेपरेटिंग टेक्निक ऑफ मिसिबल लिक्विड। मिसिबल लिक्विड को अलहदा करने के लिए हम डिस्टिलेशन इस्तेमाल करते हैं। रिकवर अ सॉल्वेंट फ्रॉम अ सोल्यूशन, एक मुहल्लिल को हम रिकवर करते हैं इसमें। क्रोमेटोग्राफी में हम कलर्ड सब्सटेंसेस को अलहदा करते हैं और सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स भी इसके ज़रिए होता है। द सिंबल यूज्ड फॉर सोडियम इज Na। द कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट ऑफ वाशिंग सोडा। वाशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट है, तो इसमें सोडियम है, कार्बन और ऑक्सीजन है। विच ऑफ दीज इज नॉट अ मिक्सचर। इसमें कौन सा मिक्सचर नहीं है? वाटर, वाटर मिक्सचर नहीं है, एयर Li मिक्सचर है। Which method is usually used to separate color substances from each other? Chromatography. The particle left behind on the filter paper in the filtration process are residue. Which atoms are found in CH4? 1 carbon and 4 hydrogen. Correct order for obtaining salt from a mixture of sand, salt and water is, सबसे पहले इसको डिजॉल्व करना है, फिर evaporate, फिर फिल्टर करना है। Air is necessary for life on earth. Air contains nitrogen, oxygen, carbon dioxide, energy gases and water vapor. 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड एंड 0.9% इनर्ट गैसेस, argon, krypton, xenon. Nitrogen is used as coolant. Oxygen is produced during the process of photosynthesis. Plants absorb carbon dioxide and convert it into glucose. Carbon dioxide is used in fire extinguishers and soft drinks. Soft drinks और fire extinction में कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल होता है। Which of these gases present in maximum amount in air? नाइट्रोजन 78% होता है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% होता है और ऑक्सीजन 21% होता है। ऑक्सीजन इज नॉट नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन की कोई ज़रूरत नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड किस चीज़ में इस्तेमाल होता है? सॉफ्ट ड्रिंक्स में भी इस्तेमाल होता है, फायर एक्सटिंग्विशर में भी, फोटोसिंथेसिस में भी, वॉशिंग सोडा और बेकिंग सोडा में भी इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर ऑल ऑफ देम। What is true for nitrogen? Nitrogen used as coolant, coolant के तौर पर इस्तेमाल होता है। What is the volume of oxygen and carbon dioxide in air? 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड है, 21% ऑक्सीजन है। इनर्ट गैसेस किस चीज़ में इस्तेमाल होते हैं? तो हीलियम और ऑक्सीजन का मिक्सचर, ये डीप सी डाइवर्स इस्तेमाल करते हैं। हीलियम ऑक्सीजन का मिक्सचर, हीलियम ऑक्सीजन। आर्गन इलेक्ट्रिक बल्ब में इस्तेमाल होता है और नियॉन साइन बोर्ड में इस्तेमाल होते हैं। वेदर बैलून में हीलियम इस्तेमाल होता है और इनर्ट गैसेस आर नॉट यूज्ड इन, तो फोटोसिंथेसिस में इनर्ट गैसेस इस्तेमाल नहीं होती। विच गैस एंड एयर इज नेसेसरी फॉर बर्निंग प्रोसेस? ऑक्सीजन इज नेसेसरी फॉर बर्निंग प्रोसेस। अ होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर को सोल्यूशन भी कहा जाता है। अ सब्सटेंस विच इज लेसर प्रोपोर्शन, वो सल्यूट होता है। अ सब्सटेंस विच इज इन ग्रेटर प्रोपोर्शन इज कॉल्ड सॉल्वेंट। हेट्रोजीनियस मिक्सचर ऑफ अनडिजॉल्व्ड सॉल्यूट इन अ गिवन सॉल्वेंट इज कॉल्ड सस्पेंशन। तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर को सस्पेंशन भी कहा जाता है। सेचुरेटेड सॉल्यूशन के बारे में ये है कि इसमें मौजूद सॉल्यूट हल नहीं हो सकता पार्टिकुलर टेम्परेचर पर। द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम इन विच कैन बी डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट टू गेट अ सेचुरेटेड सॉल्यूशन एट रेगुलर टेम्परेचर इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी को डिफाइन किया गया है। सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉल्यूट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। विच ऑफ दीज आर कम्प्लीटली सॉल्युबल इन वाटर? तो सैंड भी नहीं है, कुकिंग ऑयल भी नहीं है, वैक्स भी नहीं है। टेबल सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड, ये कम्प्लीटली सॉल्युबल है इन वाटर। अ सॉल्यूशन इज मेड डिजॉल्विंग सम सॉल्ट इन बीकर ऑफ वाटर। द सॉल्ट इज, सॉल्ट क्या है? सॉल्यूट जो कम मकदार में होता है वो सॉल्यूट होता है, मुनहिल। सॉल्युबिलिटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर? पोटाशियम नाइट्रेट और कैल्शियम क्लोराइड का सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर इंक्रीज करने से बढ़ जाता है, क्योंकि ये क्या है? ये हीट एब्जॉर्बिंग सॉल्यूट्स है। हीट एब्जॉर्बिंग सॉल्यूट का जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो उसकी सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज हो जाती है। विच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर सेचुरेटेड सॉल्यूशन? मैक्सिमम सॉल्यूट एट गिवन टेम्परेचर, ये स्टेटमेंट इसके लिए करेक्ट है। वाटर इनसॉल्युबल सब्सटेंस इज, सॉल्ट भी कुछ हद तक सॉल्व होता है, कम्प्लीटली सॉल्युबल है। शुगर भी, मिल्क भी कुछ हद तक सॉल्व होता है, लेकिन कुकिंग ऑयल ये इनसॉल्युबल सब्सटेंस है वाटर में। एक्वियस सॉल्यूशन किस चीज़ से बनता है? आबी महलूल, वाटर। Which statement is true for suspension? Suspension के लिए क्या? Solute is not completely dissolved in solvent. Energy is the ability to do work. Energy exists in many forms.
Energy possessed by a body due to its position is no potential energy. Energy possessed by a body due to its motion. मोशन की वजह से जो एनर्जी होती है वो काइनेटिक होती है और जो पोजीशन की वजह से वो होती है वो पोटेंशियल एनर्जी होती है. रिन्यूएबल एनर्जी एज द एनर्जी जनरेटेड फ्रॉम नेचुरल रिसोर्स. रिन्यूएबल एनर्जी सनलाइट है जो आसानी से पैदा हो सकते हैं. विंड, रेन, टाइड्स एंड जियोथर्मल हीट आर रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज. एनर्जी एज द एबिलिटी टू डू वर्क, इसका यूनिट है जूल और वर्क इज इक्वल टू एफ एस, फोर्स or distance. Energy possessed by a body due to its position is called potential energy. One form of energy can be converted into another form. Food possesses chemical energy. Sound and light are forms of energy. The main source of energy is sun. A moving car has kinetic energy. Which one is not a form of energy? Lamp. Lamp is not a form of energy. Heat, light, sound is the form of energy. And a battery chemical energy is changed into electrical energy. और ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन के ज़रिए होता है इलेक्ट्रोकेमिकल्स के ज़रिए. मशीन क्या होता है? मशीन इज़ अ डिवाइस दैट हेल्प्स टू मेक वर्क ईजियर. सिंपल मशीन्स की कितने अक़साम है? 7. अ व्हील इन एक्सल मेक्स वर्क ईजियर बाय चेंजिंग द अमाउंट एंड डायरेक्शन ऑफ द फोर्स अप्लाइड टू मूव एन ऑब्जेक्ट. व्हील और एक्सल क्या करता है? ये अमाउंट और डायरेक्शन ऑफ फोर्स बदलता है. पुली एज अ सिंपल मशीन यूज टू लिफ्ट द ऑब्जेक्ट्स. चीज़ों को उठाने के लिए कौन सा मशीन इस्तेमाल होता है? पुली. 3 टाइप्स ऑफ पुलीज है: फिक्स्ड, मूवेबल एंड कंपाउंड पुली सिस्टम. गियर इज अ राउंड व्हील विच हैज टीथ दैट mesh with other gears can transmit a rotational force to another gear in the same direction or in opposite direction. The speed of the driven shape depends upon the number of teeth in each gear. There are 7 types of simple machines. A combination of both mixed and movable pulleys is called pulley system. The diameter of wheel is larger than the diameter of axle. व्हील का जो डायमीटर होता है वो एक्सल से बड़ा होता है डायमीटर से. Wheels with teeth around them are called gear. Gear can transmit rotational force to another gear. Idler gear is used to turn both the gears in the same direction. Same direction में चलाने के लिए idler gear इस्तेमाल होता है. थर्ड गियर होता है. Pulley is a simple machine used to lift the objects. A flagpole is an example of fixed pulley. A movable pulley can lift greater load by applying less effort. A handrail consists of 2 mutually perpendicular gears. हैंड्रिल में क्या होता है? 2 mutually perpendicular gears होते हैं. लाइट जिस पाथ पर सफ़र करता है वो क्या होता है? रेज. लाइट travels 3 multiplied by 10 power 8 meter per second. When the rays of light traveling in one medium are incident on the boundary of another medium, they bounce back. This bouncing of light is called reflection of light. The 2 laws of reflection are incident ray, reflected ray, and normal to the surface all lie in the same plane. The angle of incident is equal to the angle of reflection. The surface which give regular reflection are known as smooth surface, and the surface which give diffused reflection are known as rough surfaces. प्लेन मिरर में क्या होता है? स्मूथ, पॉलिश एंड रेगुलर सरफेस. इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर इज लिटरली इन्वर्टेड. प्लेन मिरर कौन सा तस्वीर बनाता है? लिटरली इन्वर्टेड, वर्चुअल एंड ऑफ सेम साइज. इमेज फॉर्म बाय पेनहोल कैमरा. पेनहोल कैमरा अपसाइड डाउन तस्वीर बनाता है. पेरिस्कोप इज अ डिवाइस विच कंटेन 2 प्लेन मिरर्स प्लेस्ड इन अ ट्यूब एट 45. पेरिस्कोप में 2 प्लेन मिरर्स होते हैं और ये 45 डिग्री पर होते हैं. अ रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप is a concave mirror and a plane mirror. Reflecting telescope में एक concave mirror होता है, plane mirror होता है. Microscope, a mirror is used to reflect light onto the specimen above. Kaleidoscope is an instrument or type containing mirrors which make multiple reflection. Kaleidoscope multiple reflection पर काम करता है. Concave mirror is a mirror whose inner surface is shining. Concave mirror का inner surface shining होता है. Concave mirror का inner surface shining होता है. An instrument used to see distant object is called telescope. Speed of light is 3 multiplied by 10 power 8 meters per second. Image found in concave mirror is always depend on the position of object. Image formed by plane mirror is literally inverted. और ये virtual और erect होता है. Virtual and erect. The angle of incidence is always equal to the angle of reflection. Image formed by कन्वेक्स मिरर. कन्वेक्स मिरर जो तस्वीर बनाता है वो हमेशा वर्चुअल होता है. कन्वेक्स मिरर जो तस्वीर बनाता है वो हमेशा वर्चुअल होगा.
Concave mirror has the capability to converge the beam of light, पैरेलल बीम ऑफ लाइट को कन्वर्ज करता है, और कन्वेक्स मिरर उसको डाइवर्ज करता है. A microscope is an instrument used to produce a large image. Which one is not a rough surface? Mirror is not a rough surface. Mirror used in car headlights and searchlights or concave mirror. Multiple reflection क्लेडियोस्कोप में होता है. पेरिस्कोप में टू प्लेन मिरर होते हैं. माइक्रोस्कोप लार्ज इमेज पैदा करता है. पेनहोल कैमरा रियल इमेज. कन्वेक्स मिरर वर्चुअल इमेज पैदा करता है. Sound is a form of energy which travels as longitudinal waves. Sound is produced by vibrating body. Human ear can hear frequency range between 20 Hz to 20,000 Hz. Sound can travel through solids, liquids, and gases but cannot pass through vacuum. The speed of sound in air at 0 degree centigrade is 332 meter per second. At the same temperature, it is 1525 meter per second in water and 5130 meter per second in iron. Sound waves cannot pass through vacuum. Sound is also a form of energy. Human ear can detect frequency from 20 Hz to 20,000 Hz. Back and forth movement of an object is called vibration or oscillation. Vibration or oscillation. Speed of sound in air greatly varies with temperature. Sound cannot travel through vacuum. Human ear has three distinct parts. Speed of sound increases in air with increase in temperature. Speed of sound in iron is 5130 meter per second. The sound is a form of energy which travel through any medium as longitudinal waves. Sound क्या होता है? longitudinal waves. ईयर ड्रम ह्यूमन ईयर में होता है. एनर्जी साउंड क्या है? एनर्जी. वैक्यूम नो साउंड. ह्यूमन बीइंग 20 Hz to 20,000 Hz. Satellite is an object that revolves around the planet. There are two main types of satellites: natural satellites and artificial satellites. Artificial satellites are the objects which are purposely placed into orbit around the Earth. Natural satellites revolve around the planets, Earth's moons. Asteroids are small rocky bodies that are members of solar system. They are mostly moving between Mars and Jupiter. स्टीरॉइड्स कहाँ पर होते हैं? मार्स और जुपिटर के दरमियान. मार्स और जुपिटर के दरमियान. कॉमेट इज रिलेटिवली स्मॉल आईसी सेलेस्टियल बॉडी रिवॉल्विंग अराउंड द सन. इट हैज़ ल्यूमिनस टेल. ल्यूमिनस टेल कॉमेट. मीटर्स आर स्मॉल सॉलिड बॉडीज दैट enter a planet's atmosphere. There are different artificial satellites used for specific purposes: telecommunication, navigation, weather information, military information वगैरह. सैटेलाइट्स की दो किस्में हैं: नेचुरल सैटेलाइट्स, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स. नेचुरल सैटेलाइट्स प्लैनेट्स रिवॉल्विंग अराउंड द सन है और मून रिवॉल्विंग अराउंड अर्थ है. और आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स है जो इंसानों ने बनाई है. एस्ट्रोनॉमिकल, साइंटिफिक, कम्युनिकेशन, नेविगेशन, वेदर्स, सर्विलियंस किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है? टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट एनिमी ट्रूप्स एंड देयर एक्टिविटीज़. दुश्मनों के बारे में मालूमात जमा करने के लिए और उनके सरगर्मियों के बारे में सर्विलियंस सैटेलाइट्स इस्तेमाल होते हैं. ये आर्टिफिशियल होते हैं. अ सेलेस्टियल बॉडी रिवॉल्विंग अराउंड अ प्लैनेट इज नोन एज सैटेलाइट. Polar satellite provide weather information and map of ozone levels. The speed of geostationary is equal to the revolving speed of the Earth. GPS, Global Positioning System, pinpoint the location of the object on Earth. Surveillance satellite is used to monitor the military activities. Over 600 communication satellites have been launched since 1957. Landsat satellite is used for mapping land. Geostationary orbit is exactly above the equator. Halley's comet appear approximately every 76 years. और ये क्या है? ये बॉल ऑफ आइस एंड डस्ट है. और लास्ट अपीयर कब हुआ था? 1986 में. और नेक्स्ट अपीयर मुतवक्के है 2062 को. तो ये थे जनरल साइंस के की पॉइंट्स और एक्सरसाइज. उम्मीद करता हूँ इससे आप बहुत कुछ सीखेंगे. मिलते हैं अगली वीडियो में अगले सबक के साथ. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़. दुआओं में याद रखिएगा. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.